Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Iram Sadiq and working as a system professor at the Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Faisalabad Medical University. Today I will discuss how we can resolve a conflict in hospital setting. We will discuss some of the reasons which are causes of conflict in health setting and how we can resolve this. Conflict is state where two forces oppose each other. Conflicts arise in situations where individuals and groups are not getting that they want or need. This include marital conflict, conflicts amongst colleagues, attendant of a patient and nursing staff, medical students on a clinical rotation in conflict with hospital staff or the college administration. Conflicts are inevitable situations and are usually seen in a setting where there is poor communication or there might be power seeking. There is dissatisfaction with the management style, there is weak leadership, there is lack of opponents and change in leadership. Conflict has the quality to divert attention from the main activities, undermine morale or self-concept, polarize people and groups, reduce cooperation, sharpen differences and thus lead to irresponsible or harmful behavior. So it is therefore important to understand that at times the individuals involved may be unaware of their needs or wants. Conflicts have the potential to be constructive when they are raised in spirit to clarify and solve problems. In these circumstances, conflict and timely resolution may help relieve tension and pent-up emotions, as well as help build cooperation through learning more about each other. So what are the common causes of conflict in health setting? Nowadays you are seeing that the conflicts between doctors and attendants, between staff nurse and doctors are arising day by day. And the reason is there might be miscommunication, there might be assumptions, there might be dissatisfaction of patients and their attendance on treatment and on hospital administration, and there might be some other reasons also. Whenever there is a conflict, try to resolve it as early as possible. When you are at the administration seat, do not undermine or do not hide a conflict, because a single conflict that might be arises between your doctor and a ward servant, the some days after some days they again might be get into another conflict, then their pent up emotions will create a mess for you. So please, whenever you are at the administration seat or whenever you are working as a senior person, try to resolve a conflict as soon as possible. Here I will discuss some of the causes which can cause a conflict in hospital setting. Assumptions are being made. This is on the part of both doctors and patient. Like जब डॉक्टर्स जो हैं किसी एकेडमिक एक्टिविटी में या किसी कॉन्फ्रेंस में बिजी हों, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर देयर पेशेंट, दे अज्यूम दैट कि पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर देम, विच इज नॉट पॉसिबल. अगर कोई ऐसी एक्टिविटी या चीज़ आप अटेंड करने जा रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन की आपकी अवेलेबिलिटी पेशेंट्स के लिए कब होगी, दैट मैटर्स. सो सेम इज ऑन द हाफ ऑफ patients also. They assume that each and every kind of treatment and each and every health facility is provided by the doctors. जैसे कि पेशेंट्स वार्ड्स में यूजुअली बेड्स के लिए, हेल्थ की दूसरी फैसिलिटीज के लिए फाइट कर रहे होते हैं कि एक डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेडिंग और फॉर अदर थिंग्स जो कि जिनमें डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं. तो ये अजम्पशंस जो है ना ऑन द हाफ ऑफ पेशेंट्स और डॉक्टर्स, दैट कैन बी अ cause of conflict. When knowledge is minimal, like there are many families, when they get some investigation, they interpret it according to the Google or according to their own mindset. So जब कोई बहुत ऐसी interpretation जो पेशेंट्स के हाथ पे हो, like
कोई बायोप्सी है और वो मेलिग्नेंट भी नहीं है लेकिन पेशेंट उसको मेलिग्नेंसी तक कंसीडर कर लेता है। इसी तरह किसी भी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट जो अगर उस टाइप इलनेस में किसी और इलनेस में भी पॉजिटिव हो सकता है, तो ये नॉलेज जो होता है, ये कम नॉलेज भी नुकसान का बाइस होता है, एज यू ऑल नो। तो this is again another important cause of conflict between a doctor and a patient. And again, when expectations are too high, the patient believes that a course of chemotherapy should have completely cured him or his lymphoma, when instead he developed a complication of the treatment and deteriorates. इसी तरह किसी भी इलनेस का जो कि क्रॉनिक इलनेस है या लॉन्ग इलनेस है, उसका टाइमली जो ट्रीटमेंट है, पेशेंट कंसीडर्स दैट कि वो 100% क्योर हो जाएंगे, और जो इलनेसेस क्योरेटिव भी नहीं होती। तो उसमें आपकी एजुकेशन, पेशेंट को इंफॉर्मेशनल केयर और उनको गाइडेंस जो है, दैट विल हेल्प कि कैसे आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मल रखना है कि वो इलनेस को किस तरह से लें और ट्रीटमेंट कितने % उनको क्योर कर सकता है। सो यू विल सी दैट कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, दैट विल हेल्प to resolve each kind of conflict. There might be some of the personality issues, some race or gender or social class differences which can lead to a conflict. For example, a trainee nurse may have a low frustration tolerance and take offense of an innocent gesture or remark by a patient. A visitor or a medical student or a janitorial staff goes on a strike for being poorly paid. So these differences might be the cause of some conflict. When needs and wants not being met, patient dissatisfied with food, bedding or facilities in the ward, which is the more common reason. Patients को हम, as you all know, कि हमारे जो hospitals में availability है चीज़ों की, for the patients they are mostly dissatisfied. Bedding पे, provision of medication, provision of food and other things, and they all are expecting these all things should be provided from some doctor, from the treating doctor. जबकि treating doctor is just for the treatment of the patient. So when needs and wants are not met, तो वो भी एक important cause हो सकती है conflict के arise होने की. When values are being questioned, आप female patient है कोई and she is not comfortable कि कोई male medical patient उसको examine करे, so this is again might be a cause of the conflict. And when perceptions are being questioned, कि कोई आपका मेडिकल स्टूडेंट जैसे आते हैं वार्ड्स में हिस्ट्री लेने के लिए और दे वांट कि उनसे कोई आप प्रोसीजर में हेल्प ले लें या कुछ इस तरह की परसीव वो कर लें खुद से कि दे आर सीनियर इनफ टू डू दिस, लाइक आपके फर्स्ट ईयर रेजिडेंट होते हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती हैं, प्रोसीजर्स में आपकी सर्जिकल प्रोसीजर्स में इन्वॉल्वमेंट डिफरेंटली होते हैं, तो उसमें ये परसीव कर लेना कि आई एम सीनियर इनफ टू डू दैट प्रोसीजर या मुझे सीनियर उस प्रोसीजर में इन्वॉल्व नहीं करते जो कि मैं कर सकता हूँ. So such kind of perceptions can also be a reason for the conflict between junior senior doctors. So we have discussed some of the reasons for conflict arises, and now I will discuss some of the methods of conflict resolution. The underlying emotion in all conflicts is bottled up anger, frustration, and or an impression of being ignored or of being taken for granted. The most common underlying cause is often not a clash of interest, but a faulty communication or unfounded concerns. यूजुअली जो एडमिन रजिस्ट्रार और वार्ड के डॉक्टर्स का कॉन्फ्लिक्ट कौन अराइज होता है, बहुत सी रीजन हो सकती है. उसमें एक अहम रीजन ईद रोस्टर होता है कि ईद के रोस्टर में मसाइल आ रहे होते हैं कि कैसे जो है आप हर ईद पे मेरी ही ड्यूटी लग जाती है, या मैं इस शहर में रहता हूँ तो मैं क्या वजह है कि मैं नहीं कर सकता, ईद की ड्यूटी मुझे ही करनी है. सच काइंड ऑफ थिंग्स माइट बी द रीजन. जैसे बॉटल अप एंगर है, किसी और बात पे गुस्सा है और सॉरी किसी और चीज का गुस्सा है और ऑलरेडी आपका अपने एडमिन से किसी चीज पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आप एक रोस्टर को रह के बहुत ज्यादा पैनिक कर सकते हो इन चीजों पे.
सो फीलिंग्स अंडरलाइंग ये होती हैं, और जो मेन जो रीजन समटाइम होती है वो कॉज नहीं होती कॉन्फ्लिक्ट की, इमोशंस अहम होते हैं। आपका पहले रिजॉल्व नहीं, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है प्रीवियसली, उसकी वजह से आपका एंगर बॉटल्ड अप हुआ है, आपके इमोशंस पेंट अप हुए हैं, वो रिजॉल्व नहीं हो सके प्रॉपरली, तो वो नेक्स्ट सेम पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट दैट विल अराइज अ मेस फॉर यू। The worst way of dealing with conflict is to brush up them under the carpet, to ignore them or postpone their resolution. Again, the same conflict will do a mess for you. So, a formalized strategy to solve conflict is called organized conflict management. The following steps can help resolve most conflict radially. Meet conflict head on. Show mutual respect by separating the persons from the problem. Do not try to corner, attack, or undermine the individuals involved in the conflict. ट्राई करें कि सॉल्यूशन के लिए फोकस कॉन्फ्लिक्ट की रीजन पे हो, ना कि उन पर्सन्स का, अगर कोई डिफरेंसेस हैं ऑलरेडी किसी के, उनको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। Set goals that lead to a win-win situation for both the parties in conflict rather than a victory of one party at expense of other. Plan for resolving the conflict through free communication. Free and effective communication will help in its resolution. So be honest about concerns and reservations and verbalize them as early as possible. Agree to disagree. Healthy disagreement led to a better decision. Leave individual egos out of negotiations and avoid serving or pleasing one individual. Aim at satisfaction of the group rather than leader alone. Exploitative and deceptive methods of resolving conflicts can succeed temporarily but are likely to generate bigger issues in future. So अगर आप अपने हेड के क्लोज हैं और आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए साइन किए गए हैं, तो डोंट ट्राई कि आप अपने हेड को खुश कर रहे हैं या आप किसी एक पार्टी को खुश कर रहे हैं। आप ऑनेस्टली कंसर्न्स को एड्रेस करें, बी ऑनेस्ट कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं और आपको क्या चीज़ बेहतर लग रही है, और दोनों पार्टीज के लिए एक विन विन सिचुएशन रखें, रादर देन कि आप किसी एक पार्टी की तरफ ज़्यादा आप शो कर रहे हो और दूसरी को कम उसमें रखें। If you are the one coordinating the dialogue, let the negotiating team create solutions rather than vertically handing over the solutions. People support what they create. Discuss difference in values openly. Undertake deep analysis of the situation that generated the conflict. Conflict resolution based on superficial analysis is likely to result in a bigger conflict in future. A conflict arising out of the hurt feelings and emotional reasons is likely to settle down on its own with passage of time and an improved communication between the parties. Because emotions take time to settle down. So, on hurt feelings, give them time. Things will be settled down, and things will be settled by improved communication between the two parties. The conflict that arises out of morality issues, religious differences, or cultural differences is unlikely to resolve. Here the two parties can agree for a peaceful coexistence in spite of the conflict. Like जो आजकल बहुत ज़्यादा बहस होती है मजहब पे, पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा डिबेट हो जाती है लोगों में, और दो डिफरेंट पार्टीज के लोग आपस में एक रीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, एक पार्टी को फेवर करने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप उन दोनों की पार्टीज के एग्जिस्टेंस को पीसफुली एक्सेप्टेंस देते हैं। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। Realistic fact-based conflict can be best resolved through creative solutions put forth by the parties themselves.
The best method of dealing with conflict is, however, by preventing them. A sound management system in medical college, department, wards, and hospitals that involve mechanism of quality control, free horizontal interaction, and sharing of information. And again, leadership is very much important. The person who can lead properly can be a good in conflict resolution. Leadership based on principles of avoiding extreme actions and instead following a middle path or mean, ensuring equity and justice, and imparting feelings of security and predictability can prevent the rise of conflict as well as ensure their early resolution. So here we are ending up the methods of conflict resolution. Here I have an MCQs. The attendants of a patient start quarreling with the nursing staff of the hospital. The doctor in charge can best resolve this conflict by referring the patient to another ward, by meeting the conflict head-on, changing the duty of nursing staff, by defending the attitude of one party, or by ignoring the conflict. So the best methodology is B, by meeting the conflict head-on. So this is all about today's lecture. Hopefully you will enjoy the lecture. If you enjoy, kindly do not forget to share and subscribe the channel. Thank you.